आपको बहुत सारे जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। ओके, टेक सम आइस इन अ स्टील ग्लास, व्हाट डू यू सी आउटसाइड द ग्लास, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। आप किसी स्टील की ग्लास में जो है आइस डाल के रखिए तो आपको उसके बाहर क्या दिखाई देगा, आपको उसके बाहर जो है छोटे छोटे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। एयर, as you all must be knowing, we are all surrounded by air. Air is all around us. Okay, you are surrounded by air. You cannot see it, but you can feel the air when it blows. Moving air is called wind. We cannot see air, but we can feel it by its blowing. जब वो blow होती है, जब हवा चलती है तब हमें हवा feel होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। Okay, moving air is called wind. Air is made up of several gases. Important ones are oxygen, carbon dioxide and nitrogen. ठीक है, एयर जो है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है। जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो कौन सी हैं, विच आर द इंपॉर्टेंट वंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द इंपॉर्टेंट गैसेस। ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको सभी को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स फिर यूज कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट डे टाइम दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, बट एट द नाइट टाइम दे डू रेस्पिरेशन। ठीक है, रात को जो है प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मतलब कि ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, एयर ऑल्सो हैज अदर थिंग्स, एयर के बीच में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो दूसरी है उसमें क्या क्या है, इट हैज वाटर वेपर, डस्ट एंड जर्म्स। ठीक है, एयर के अंदर जो है वो वाटर वेपर, डस्ट और जर्म्स भी होते हैं। ये ड्यूरिंग द डे का जो है फोटो है और ये ड्यूरिंग द नाइट का है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का है और ये रेस्पिरेशन का फोटो है। ठीक है, इसमें जो है प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके जो है खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे रिस्पायर, वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को छोड़ते हैं। इसीलिए सब बोलते हैं कि रात को जो है वो हमें प्लांट्स के नीचे ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। एयर ऑल्सो हैज स्मोक एंड सम हार्मफुल गैसेस गिवन आउट बाय कार्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, कार्स और फैक्ट्रीज का जो स्मोक होता है, जो उसका धुआं होता है, उसमें से भी जो है वो स्मोक और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। दीज गैसेस पॉल्यूट द एयर, और ये गैसेस क्या करती हैं, एयर जो है हमारे आसपास की जो हवा है उसको पॉल्यूट कर देती है। When you breathe in this polluted air, you can fall sick. जब हम इस polluted हवा को, प्रदूषित हवा को हम ब्रीथ करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे फैक्ट्री का पिक्चर दिखाया है, इसमें से क्या निकल रही है, स्मोक निकल रहा है। ओके, स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज मेक अस इल व्हेन वी ब्रीथ द polluted air. Now forms of water. ठीक है, वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स के होते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, वी विल रीड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड द सी। वाटर कहाँ होता है, रिवर्स में, लेक में, सी में। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड, और ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है। वाटर इज अ लिक्विड, इट फ्लोज। वाटर क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है और जो कि फ्लो करता है। ठीक है, और हमारी जो 70% अर्थ है वो वाटर से भरी हुई है। ओके, व्हेन वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम इट स्लोली डिसअपीयर्स। जब हम वाटर को थोड़ा टाइम के लिए गर्म करते हैं तो जो है वो डिसअपीयर, मतलब कि थोड़ा डिसअपीयर हो जाता है। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो क्या हो जाता है, वो वाटर को हीट किया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर वेपर इज अ गैस। ठीक है, तो वो जो वाटर वेपर बने वो क्या होती है, गैस होती है। और इस ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, इवेपोरेशन। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड वाटर वेपर इज अ गैस. This is the picture of water changes to water vapor when heated. Okay, ये नीचे गैस स्टोव दिखाया हुआ है, स्टोव दिखाया है, उसमें से फायर निकल रही है और हमने एक बाउल में जो था पानी था उसको हमने गर्म किया तो अगर आप उसके ऊपर एक कोल्ड प्लेट रख देंगे ढक के, ठीक है, आप घर पे कभी देखना आपके मम्मी जब करते हैं गर्म पानी, तो अगर आपने उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई है, ठीक है, तो आप जब उस प्लेट को ऊपर, लिड को ऊपर करोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो क्या है, और ये जो हवा ऊपर जा रही है वाटर वेपर, ठीक है, ये क्या है, गैस। ठीक है, यू कैन चेंज वाटर वेपर बैक टू वाटर बाय कूलिंग इट।
कि जो वो गर्म पानी है जिसके ऊपर से वो वाटर वेपर भाप निकल रही है, अगर उसके ऊपर हम कूल प्लेट रख दें तो वो जो भाप है कूल प्लेट से टकरा के दोबारा क्या बन जाएगी, इट टर्न्स बैक टू वाटर। यू कैन सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, तो आपको जो है प्लेट के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देंगे। वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर व्हेन इट टचेस द कूल प्लेट, ठीक है। जो वाटर वेपर है वो दोबारा से किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर में, जब वो ठंडी प्लेट को टच करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके। If water is kept in the freezer of a refrigerator, it changes to ice. अगर हम पानी को जो है फ्रीजर में रख देंगे, अब गर्मियों में करते हो ना समर्स में, आइस ट्रे जो होती है उसके अंदर आप पानी भर के फ्रीजर में रख देते हो, तो आप उसके बाद थोड़ी देर में देखते हो 1-2 घंटे बाद तो क्या होता है, वो आइस बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। वाटर चेंजेस टू आइस व्हेन कूल्ड, ये देखिए आइस ट्रे में पानी भर के हमने फ्रीजर में रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद क्या देखा, ठंडा होकर क्या बन गया, आइस बन गया। आइस इज हार्ड, आइस जो है वो हार्ड होती है, इट इज अ सॉलिड, तो वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। वाटर वेपर क्या था, गैस था, ओके। व्हाट हैपेंस इफ यू कीप आइस इन अ वार्म प्लेस, इट चेंजेस बैक टू वाटर। अगर हम उस आइस को दोबारा किसी वार्म प्लेस में रख देंगे, गर्म जगह पे रख देंगे, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, आइस मेल्ट होके दोबारा इट टर्न्स बैक टू वाटर। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ओके। वाटर, वाटर वेपर एंड आइस आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो 3 फॉर्म्स कौन सी हो गई वाटर की, वाटर, वाटर वेपर एंड आइस। वाटर मीन्स लिक्विड, वाटर वेपर गैस एंड आइस मीन्स सॉलिड, ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। Now the water cycle. You now know that you can heat or cool water to change it from one form to another. ये हमें पता है कि हम वाटर को गर्म या ठंडा करके उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ओके। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म इन नेचर टू, वाटर जो है अपनी फॉर्म नेचर में भी अपने आप चेंज करता है, कुदरत में भी जो है वाटर की फॉर्म अपने आप चेंज होती है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। The heat of the sun warms the water in seas, rivers and lakes. The water evaporates to form water vapor, mixes with air and rises up. ठीक है, जो सन की हीट होती है वो रिवर, लेक और सी का जो पानी है, ठीक है, जो रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, समुद्र का जो पानी है उसको गर्म कर देता है, ठीक है, जो सन की हीट होती है। जो वाटर जो है वो गर्म होके इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है, ठीक है, फिर वहां जाके वो राइज अप मतलब हवा से ऊपर उठता है, फिर हाई अबव द ग्राउंड द एयर इज कूल, और जो ग्राउंड के ऊपर की बहुत ज्यादा ऊपर की हवा है वो क्या होती है, कूल होती है, तो जो हॉट एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। द वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो जो वाटर वेपर हीट की, जो वाटर था हीट की वजह से वाटर वेपर में टर्न हुआ था, वो क्या होगा कि वहाँ पे जो ऊपर की हवा गर्म ठंडी है, सॉरी, वहाँ उसके साथ जाके वो मिल जाएगा और कूल हो जाएगा, और कंडेंस ठंडा होके जो है वो छोटे छोटे उसके टाइनी ड्रॉप्स के, मतलब जो वाटर है उसके टाइनी ड्रॉप्स बन जाएंगे। दीज ड्रॉप्स गैदर टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये ऐसे टाइनी ड्रॉप्स इकट्ठे होंगे, ये सब आपस में क्या मिलकर बना देंगे, क्लाउड्स, बादल बन जाएंगे, ठीक है। व्हेन द क्लाउड्स पास थ्रू कूलर एयर दे गेट कूल्ड फर्दर, जब वो क्लाउड्स जो हैं फिर और ठंडी हवा के बीच में से गुजरते हैं तो वो और ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। देन वाटर ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू बिकम बिगर, और जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो और ज्वाइन होके उनका साइज और भी बड़ा हो जाता है। व्हेन दे बिकम वेरी बिग दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, और वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं जो बहुत बड़ी हो गई है साइज में, तो जब उनका बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो जाता है तो वो धरती पे आ जाते हैं बारिश के रूप में, ठीक है, तो बारिश होती है। ये जो पूरा है ये वाटर साइकिल है। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू रिवर्स, लेक एंड सीज वेयर इट अगेन चेंजेस टू वाटर वेपर। जो रेन वाटर है वो दोबारा से कहाँ चला जाता है, रिवर लेक्स एंड सीज में, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब सनलाइट पड़ती है, सन की हीट आती है, तो जो दोबारा जो वाटर है वो अगेन इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, राइजेस अप, मिक्सेस विद द कूल एयर, फॉर्म क्लाउड्स एंड देन बैक एज रेन, ओके। दिस रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, ठीक है। ये जो रिपीटेड चेंज है पानी का, पानी कैसे हुआ, जब उस पर सूरज की धूप पड़ी तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर जो ऊपर की हवा ठंडी थी, वाटर वेपर हवा में जाके ठंडे हो गए और उन्होंने क्या बना लिया, छोटे छोटे पानी के कण बना लिए, फिर जब और थोड़ा ठंडी हवा से गुजरा तो वो क्या बन गए, क्लाउड्स, बादल बन गए। जब बादल बहुत ज्यादा बड़े हो गए
तब वो धरती पे रेन के रूप में गिरने लगे और वो जो रेन वाटर है वो दोबारा कहाँ चला गया, रिवर्स, लेक एंड सीज में। तो ये पूरा जो है एक साइकिल बन गया, ठीक है। तो दिस रिपीटेड चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इज कॉल्ड द वाटर cycle. Sometimes when the air is very cold, the water droplets in the clouds freeze to form ice. The ice then falls as hail or snow. अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो, ऊपर की और भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो हो, तो जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फ्रीज होके वो क्या बन जाएंगे, आइस। तो वो आइस के रूप में नीचे गिरते हैं। हम कभी कभी देखते हैं ना, जैसे कश्मीर है अपना ऊपर नॉर्थ का पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल बहुत होती है, तो वहाँ का जो ऊपर की हवा बहुत ठंडी है, ओके। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। अभी इससे हम पहले वीडियो देख लेते हैं। My house. Do you want to know where I come from? We'll begin with the water cycle. The continuous movement of water rising from the earth to sky and back to the earth is called water cycle. Come on, let me show you. The first step of water cycle is evaporation. It is through sun. Today it is very hot. Hey look, I'm flying. The sun heats up the water and changes it to gas or steam called water vapors. This process is called evaporation. See, more water is coming out of the trees. Water present below the surface of earth is being soaked up by trees. It travels up and is released in the environment mainly through the leaves. This process is called transpiration. Hello friends! At higher altitude, the water changes from gaseous state to liquid droplets or solid grains to form clouds. This is called condensation. It's getting heavier. Please, T-board. Hooray! When water droplets in clouds become so large that the clouds can no longer hold them, they fall on the earth in the form of precipitation. This includes rain, sleet, hail, and snow. Grandpa, can you please help me? Sure. Oh no! What happened? Aren't you flying your kite? No, there is no air. But air is present all around us. I mean that the air is not moving. Right. There is no moving air. Or we can say, there is no wind. air is present all around us. Moving air is called wind.
Hey, doggy, doggy. Doggy? Is it okay? Of course, it's okay. It is breathing heavily because of the running. Don't you breathe hard when you run? Oh, yes, you are right. So even dogs breathe. Yes, both animals and plants breathe, and they need air to breathe. You mean even this worm needs air to breathe? Oh, yes. Oh, so this butterfly, snail, and the rabbit too need air to breathe. Indeed. And what about plants? Plants. Do plants also need air to breathe? Oh, yes. Plants do need air to breathe. Animals and plants both need air to breathe. So are we alike? I mean the plants and us? Yes, plants and animals are very much alike. Both breathe in air. And what about breathing out? Yes, both plants and animals breathe out the part of air that they do not need. What do you mean? Air is a mixture of many gases, such as oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, etc., etc. Animals breathe in oxygen, whereas plants breathe in carbon dioxide. Animals breathe out carbon dioxide and plants breathe out oxygen. Where do we get all this air from? It is present all around us. It is part of our atmosphere. Atmosphere? The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. Are these gases present in the same amount in the air? No. Look at this bird bath. Imagine that instead of water, it filled with air. If we divide air into 5 parts, then one part would be oxygen, and the remaining 4 parts would be nitrogen, carbon dioxide, other gases, and water vapors. But Grandpa, air is a mixture of so many gases. How come we still cannot see it? Air is colorless, and so are the gases and water vapors that make it. Therefore, you can feel it, but cannot see it. Look at those flowers. They are swaying. This means that the air is moving. Oh, I can fly my kite now. Anuj, let us go back home now. Grandpa, please come here. I can smell air. Anuj, air has no smell or taste. What you smell is the fragrance of these gardenia flowers. The moving air or the wind is carrying their sweet fragrance everywhere. Can I take that balloon, Grandpa? Yes, but first, tell me what is inside the balloon. Very simple. It's air. Very good. The balloons without the air inside them looks like that. And with the air, they became so big. Anuj, what this means is that air occupies a space and has weight. Anuj, let's go home. I will show you something more on the way. All these cars burn fuel, either petrol or diesel, and emits harmful gases. This results in air pollution.
I know, Grandpa. The mixing of harmful gases, smoke, and other solid particles in the air is called air pollution. When we inhale this polluted air, it makes us ill and results in diseases like cough, asthma, irritation in the eyes, skin problems, lung infection, etc. Air pollution is caused by harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, and so on. These are called air pollutants. Grandpa, let me show you a magic. Ta-dang! That's a clever trick. But do you know why the water and the cardboard are not falling? Air exerts pressure on the cardboard in the upward direction, and therefore the cardboard does not fall. Grandpa, it's your turn now. For what? To show me a magic trick. Come on. Can you light off a candle without touching or blowing it off? No. Can you? Wow. You see, air is required for burning. In fact, the oxygen part of the air is required for burning. The covered burning candle used up all the oxygen inside the glass, and when no more oxygen was left in the glass, it burnt out. And this candle is still burning because it is still getting the oxygen. That's right. Thanks, Grandpa. Today I learned so many things about air. Air is present all around us. Moving air is called wind. Animals and plants both need air to breathe. Animals and plants both breathe in air and exhale the part of air they do not need. Air is a mixture of many gases such as oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. Animals breathe in oxygen and plants breathe in carbon dioxide. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. If we divide air into 5 parts, then one part would be oxygen and the remaining 4 parts would be nitrogen, carbon dioxide, other gases, and water vapors. Air is colorless and therefore cannot be seen. Air pollution is caused by harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, and so on. These are called air pollutants. Air has no smell or taste. Air occupies space and has weight. Air exerts pressure. Air is required for burning. As shown in the picture, this is the sea, rivers and lakes. जब सनलाइट पड़ी, सन की हीट पड़ी, ओके, तो ये क्या था, वाटर जो है इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन गया, ठीक है, ये वाटर वेपर बन गया। फिर जब वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आया तो कंडेंस होके वो क्लाउड्स बन गए। फिर जब और ऊपर गए तो बड़े बड़े और भी उसके जो है वाटर ड्रॉपलेट्स वो और बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद जो क्लाउड्स भी बहुत बड़े बड़े हो गए। तो फिर जब वो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर रेन होती है, और जो ये रेन वाटर है दोबारा कहाँ पे आ गया, सारा रिवर्स, लेक्स और सी में। फिर दोबारा से इवेपोरेट हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर दोबारा क्लाउड्स बने। तो ये पूरा जो साइकिल है, वाटर साइकिल, ये चलता रहता है और ऐसे ही जो है वो धरती पे बारिश होती है। नाउ वेदर, अभी जो वेदर है वो कभी एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इवन कि अगर सपोज कभी धूप है तो एकदम से तुरंत बादल आ जाएंगे और बारिश भी हो सकती है। द वेदर एट अ प्लेस कीप्स चेंजिंग, वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, एयर एंड
वाटर। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है और वो किस पे डिपेंड करता है? सन, एयर एंड वाटर पे। द सन वार्म्स द अर्थ, जो हमने ये पहले पढ़ा वाटर साइकिल में कि जो सन है उसकी हीट से अर्थ जो है वो गर्म होती है। इट इज हॉट व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव योर हेड, इट इज नॉट सो कोल्ड व्हेन द सन गोज डाउन। जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है इन द आफ्टरनून, तो क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा धूप तेज होती है, ओके। लेकिन ऐसा सुबह और इवनिंग के टाइम पे नहीं है। मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में जो है इतनी गर्मी नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सनरेज है वो स्लैंटिंग होती है, और जो दोपहर के टाइम आफ्टरनून में जो सनरेज है वो डायरेक्टली अबव आवर हेड होती है, ओके। व्हाई डज द विंड ब्लो? हवा क्यों चलती है? व्हेन द सन शाइन्स इट हीट्स अप द लैंड, ओके। जब हवा चलती है तो क्या होती है कि जब सन शाइन करता है, जब सन की हीट पड़ती है तो इट हीट्स अप द लैंड, वो लैंड को, धरती को जो है वो गर्म कर देता है। द वार्म एयर राइजेस अप, और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रशेस इन टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड, ठीक है। जो आजू बाजू की ठंडी हवा है, जो गर्म हवा थी वो तो ऊपर उठ गई, लेकिन जो आसपास की ठंडी हवा है उसने आके तुरंत गर्म हवा की जगह ले ली, ठीक है। तो जिससे क्या है, जो ये हवा की मूवमेंट है इसमें क्या बोलते हैं हम? विंड। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी होती है, ठीक है। दिन के टाइम जो है वो समुद्र से आती है हवा जगह लेने के लिए धरती पे गर्म हवा की, और रात को जो है वो हमारे लैंड से हवा चल के समुद्र पे जाती है, और समुद्र की हवा जो रात को वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। इसको हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोलते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मॉर्निंग्स आर वार्म, आफ्टरनून्स आर हॉट, ये हमने पढ़ा। मॉर्निंग्स आर वार्म, ठीक है, क्योंकि वो वार्म ही होती है, उस टाइम पे जो सनरेज है वो स्लैंटिंग होती है, और आफ्टरनून जो है वो बहुत होती है, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, ठीक है। इवनिंग्स आर ऑल्सो कूल, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है वो स्लैंटिंग होती है और सन जो है वो नीचे जा रहा होता है। When the wind blows gently, it is called a breeze. जब हवा बहुत अच्छे से चलती है, blows gently, मतलब gently blow करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? breeze, okay. When the wind blows very fast, it is called a gale. जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है हम उसको क्या बोलते हैं? gale, ठीक है। When the wind moves with great speed and there is heavy rain, it is called a storm. जब बहुत और भी ज्यादा तेजी से हवा चलती है और साथ में बारिश होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? storm बोलते हैं। A storm can cause a lot of damage to trees and building, ठीक है। जो स्टॉर्म आता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ट्रीज का, बिल्डिंग्स का, लोगों का, प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। ये आपने टीवी में देखा होगा कि जब स्टॉर्म्स आते हैं तब कितना सारा डैमेज होता है। ये विंड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। जो वार्म एयर थी लैंड की वो ऊपर उठ गई, और जो सी की कूल ब्रीज थी उसने इसकी जगह ले ली, ओके। और ये हमने देखा है कि डैमेज कॉज्ड बाय अ स्टॉर्म। Now the seasons, the weather changes throughout the year. ये तो हमने देखा कि weather जो है चेंज होता रहता है, ओके। It is hot in some months and cold during the other months. थोड़े मंथ्स में ये गर्म होता है और थोड़े मंथ में ये वो ठंडा होता है। Sometimes it rains a lot. हमने पहले सोशल के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो दिल्ली है उसका एक्सट्रीम क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मुंबई और जो कोलकाता है उनका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, neither too very hot in summer, not very cold in winters, okay. And तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मॉडरेट क्लाइमेट है। तो ये ऐसा ही है कि इट इज हॉट इन सम मंथ्स एंड कोल्ड ड्यूरिंग अदर मंथ्स, समटाइम्स इट रेन्स अ लॉट, और मानसून मंथ्स भी होते हैं। इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजंस, ठीक है। हमारे इंडिया में 3 मेन सीजन हैं। कौन कौन से? समर सीजन, रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन। It is very hot during the summer season. The days are long and warm. People like to stay inside and drink plenty of cold drinks. जब गर्मी होती है तब हमें घर के अंदर ही रहना अच्छा लगता है। हम लोग एसी ऑन करते हैं, ओके। हम लोग जो है कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, सॉरी आइसक्रीम खाते हैं, है ना। उस टाइम पे हमें ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमें अपने घर के अंदर ही रहना अच्छा लगता है। और जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं? डेज आर वेरी लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट रेन्स अ लॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जब बारिश होती है इंडिया में, जो इसके थोड़े पार्ट्स हैं, जो साउथ के पार्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली बारिश होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे वहाँ पे वाटर लोडिंग और फ्लड्स ये सब भी आ जाते हैं। द विंड ब्लोस एंड द क्लाउड्स आर डार्क ग्रीन कलर, तब हवा चलती है और जो क्लाउड्स क्या है वो डार्क ग्रे कलर के हो जाते हैं। रेनी सीजन, द विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन, और सबसे ठंडा सीजन
विंटर सीजन, है ना। द डेज आर शॉर्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इट इज वेरी कोल्ड। जैसे हमने पढ़ा कि दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स टू कीप वार्म, और वो गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। और गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती है ना, हम लोग गरम गरम हलवा खाते हैं गाजर का, फिर हम लोग गरम गरम सूप पीते हैं। तो सर्दियों में हमें जो है गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं और गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इट स्नोज इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जैसे हमारा नॉर्थ का पार्ट है, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे क्या है स्नोफॉल होती है। बट इन अदर पार्ट्स इट इज नॉट कोल्ड इवन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जैसे हमारा है वेस्ट का पार्ट, उसमें विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा विंटर नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ये विंटर सीजन है। When the seasons change, we wear clothes to suit the weather. जैसे सीजन चेंज होता है तो हम वैसे क्लोथ पहनते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। जैसे समर है तो हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं, विंटर है तो वूलन क्लोथ पहनते हैं, और अगर रेनी सीजन है तो हम रेनकोट्स पहनते हैं, बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला साथ में रखते हैं, है ना। और उसी टाइप के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे समर से तो मैंगो बहुत आता है तो हम लोग मैंगो खाते हैं, है ना। तो और विंटर्स में जो है अपना ये ऑरेंजेस वगैरह ये सब बहुत आते हैं, तो हम सीजनल फ्रूट्स जो है वो खाते हैं। वी ऑल्सो गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स। Did you know the wettest place on earth is Mansaram in Meghalaya? Mansaram receives around 1200 centimeters of rain in a year. Most of the rainfall occurs between June and September. ठीक है, जो अर्थ पे मेघालय में एक स्थान है हमारे अर्थ के ऊपर, मेघालय का पार्ट है, वो कौन सा है? मानसरम। वहाँ पे जो कितने सेंटीमीटर रेन होती है पूरे साल भर में? 1200। ओके, 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे होती है। तो ये और कौन से मंथ्स में होती है? इसके मानसून मंथ्स में होते हैं बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। ओके, जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। नाउ यू नो एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक। ये तो हमें पता ही कि एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है। अगर एयर नहीं होती तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते, है ना, हम सांस भी नहीं ले पाते। और एयर के अंदर जो है वो 3 मेन इंपॉर्टेंट जो है वो गैसेस हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और उसके अंदर और भी गैसेस हैं, कौन कौन सी है? और भी अदर चीजें हैं, कौन सी? वाटर वेपर, डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक। वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड वाटर, गैस मीन्स वाटर वेपर, एंड सॉलिड मीन्स आइस। In nature, water changes to water vapor, which cools and comes down as rain. This is called the water cycle. A breeze, gale and storm are kinds of wind. जब हवा gently चलती है तब उसको क्या बोलते हैं? breeze. जब थोड़ी हवा के साथ चलती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? gale, जिसको आंधी बोलते हैं, और storm, जिसको कि तूफान बोलते हैं। ये हवा के 3 प्रकार हैं। Okay? In India, we have 3 main seasons: summer, rainy season and winter season. We wear different kinds of clothes and eat different kinds of food in different seasons. जैसे हम सीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, सीजन के हिसाब से हम खाना खाते हैं। ओके, तो जैसा सीजन हो हमें उस अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है और रहना चाहिए भी, नहीं तो हम फिर बीमार हो जाएंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम गूगल मीट में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।